Hello everybody, welcome back to my channel. Welcome to another vlog. I just woke up. It's Friday और मैं अपने लिहाज से काफ़ी जल्दी उठी हूँ. It's a nice day. थोड़े थोड़े बादल आए हुए हैं. So let's wake up and spend the day at home because आज छुट्टी है. Yes. It's a cloudy day today. गर्मी थोड़ी सी आ तो गई है लेकिन आज जो है इतनी धूप नहीं है. Hey guys, so I just got done doing a little bit of dishes. अभी मैं करूँगी नाश्ता at like 12 p.m. 12:30 हो गया actually इस वक्त तक. और मौसम और भी क्लाउडी होता जा रहा है. कल ही मैं रो रही थी कि इतनी गर्मी हो गई है, गर्मी आ गई है, oh my god. And अभी देख रही हूँ तो it's just getting cloudier and the मौसम is getting better. What am I having for breakfast? I'm gonna have orange juice. Just a minute, ढेर सारी ice डाल गया. This is the best way to have orange juice in summer, guys. And then I'm gonna have some yogurt and granola. मौसम और भी क्लाउडी हो गया गाइस. वाओ, लगता है आज बारिश होगी. I'm gonna go shower in a bit, but before that थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेते हैं. इसमें मैंने मिक्स किया है कोकोनट ऑयल, रोज़मेरी ऑयल एंड थोड़ा सा एक और मेरे पास मिक्स्ड ऑयल पड़ा था. अजान का वक्त हो रहा है, खुतबा हो रहा है बिकॉज मस्जिद जो है हमारे घर से बहुत करीब था. I've just been listening to the खुतबा and the मौलवी साहब is talking about the importance of वज़ू. So अच्छी बात है, इतनी करीब होती है मस्जिद and you know you get to hear these things and we show you how करीब it is. तो अंधेरा होता जा रहा है और हवाएं भी चल रही हैं. This is how close the masjid is. ज़्यादा अंधेरा हो गया वरना मेरे वॉशरूम में बहुत ज़्यादा लाइट होती है. तो I'm just gonna use my scalp massager and then gonna apply the oil and then I'm gonna shower. So this is a few hours later. I finally showered and we are going for Kadhai because the mosam is so good. It's quite windy and maybe it'll rain, I don't know, but yes, let's go. So we're on the hunt for authentic Peshawar style kadhai and Google said but kadhai se achhi milegi. But kadhai, this is where we're gonna go. This is what Google said. यहाँ से सबसे अच्छी कढ़ाई मिलती है in Islamabad, Peshawari style. यहाँ खड़ी कर दो ना. Okay, यहाँ भी. Wow. Family outdoor sitting is here, so we're going there. So this is the outdoor sitting. वो वाली जगह थोड़ी गंदी हुई है because I think it's raining. They do not have the Peshawari style कढ़ाई जो हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए अब हम जा रहे हैं. इसी के साथ है शिनवारी. So we're gonna ask them अगर उनके पास Peshawari style कढ़ाई है. तो अब हम आ गए हैं पेशावर शिनवारी and we're hoping कि यहाँ पे होगी. We're hoping कि यहाँ पे कढ़ाई मिल जाएगी हमें पेशावरी स्टाइल इंशाल्लाह. What does it say? नमकीन शिनवारी कढ़ाई. This is the one we're looking for. But यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा है. ये चिकन की नहीं आई थी. चिकन की होगी, पता नहीं. Actually शिनवारी चिकन कढ़ाई है. 950. That's not bad. That's pretty good. Okay, let's ask. Order. बुलाओ उसे. Okay, यहाँ शुरू हो गई है बारिश. And I think we're gonna have to move in the shade. क्या कह रहे हो आप? So we're just waiting here. And कल रोहान का एक अच्छा सा event है. I will like have that in a separate vlog for you guys. And excuse my हालत because I look really bad right now. अभी बस नहाई थी and that's just how I came. Anyways, so there's this special thing happening. He's performing. He's playing his harmonium. और आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. तो अभी घर जाके हमने उसकी तैयारी भी करनी है. मैंने क्या पहनना है आई डोंट नो. इवन द परफॉर्मेंस उसकी है लेकिन मैंने क्या पहनना है दैट्स अ बिगर क्वेश्चन. सो लेट्स सी एंड देन उसका व्लॉग प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर आप लोग ये वाला देख रहे हैं. ये है F10 में पेशावर शिनवारी की सिटिंग एंड यहाँ पे मिलती है हमें ऑथेंटिक जो है पेशावरी कढ़ाई. Finally, after like 40 minutes, our food is here and I think that is this the kadhai that you wanted? Is this the Peshawari style kadhai? That's the right way to eat kadhai, guys. Is it like how you get it in Peshawar? But at least it's close. अब हम भी try करते हैं. Is it too hot? It's very similar to that. Is it too hot though? It is. It's yummy. I like it. Anna is going to teach us the right way to eat a Peshawari kadhai. Please go ahead. मैंने अपने लिए निकाल लिया है. सबसे पहले ये जो है this is ये अच्छी बात नहीं है. तौहीन कहते हैं. तौहीन है ये. Peshawari. ये आया. Raita. Is that a thing? Do you actually have to add it? हाय. Okay.
फिर आपने इसको थोड़ा उधर करना है, इसको थोड़ा मिक्स करना है। एंड चिकन का मुझे पीस तोड़ना रोहान है, डिसोन कर देता है बिकॉज मैं उसके अंदर से खाती हूँ बट चिकन का पीस तोड़ना है। नाइस 40 मिनट्स बाद आया लेकिन एटलीस्ट अच्छा है, मज़े का है। सो व्हाट डू यू थिंक द बिल इज गोना बी? बिल इज गोना बी 350 व्हाट मेक्स यू से दैट? 950 की कढ़ाई है, 120 के नान होंगे, 110 100 120 के नान होंगे, 260 के रायता सलाद है, so 1700 होगा। It's 16:30. You were so देसी close. Wow. Amazing. Wow. So unfortunately, they do not accept card. So Rohan is at the ATM to get cash so that we can finally pay them. And yes, I like the kadhai. It was pretty good. Rohan is like still इतना मज़ा नहीं आया जो पेशावर वाला आता है, but it was close. तो yes, but कढ़ाई के पास नहीं थी. They're like हम जो है अपनी स्पेशल कढ़ाई बनाते हैं जो कि बटर और घी वगैरह में बनाते हैं. हमारे पास वो जो टमाटर वाली कढ़ाई होती है पेशावरी स्टाइल वो नहीं है. तो यहाँ पे थी एंड इट वाज क्वाइट रीजनेबल. इट वाज हाफ कढ़ाई फॉर 950 एंड आप लोगों ने देख ही लिया है कि हमारा बिल टोटल 1600 बना था, विच इंक्लूडेड ड्रिंक, नान्स, roti, salad and raita. How was your experience? Pretty good. Okay, awesome. Could have been better, but still. Stop comparing it to like actual kadhai that you get in Peshawar, you know. Islamabad standards, I think it was pretty good. Admit it. Islamabad standard. So far, was it not the best kadhai that you've had in Islamabad and Pindi? Yeah, it was. Here's Rohan practicing for his performance tomorrow. The new haircut and body thing. You got this. Now my dilemma starts कि मैंने सुबह क्या पहनना है. I actually have nothing. I mean, I have, alhamdulillah, closet full of clothes, but I don't know what I'm... But I don't have anything wearable for tomorrow. So maybe I can share some options with you guys. I could wear this. But I think this is too plain. I've worn it like a few times already. I don't want to wear this. And we also have this, but I wore this on Chandrat in like the day, I think before or after, I don't know. But ye bhi main pehen chuki hu. What the fuck. What I really want to wear is this gown type, but iska inner nahi mil raha mujhe. Iske niche ek black inner tha, वो नहीं मिल रहा. So if I could find that or if I could like find an alternative, तो I think मैं यही पहनूंगी. But that's only अगर मुझे कुछ मिल गया, नहीं तो can't wear this. So let's keep this out here in case I get lucky. ये भी मेरे पास एक traditional सा gown है, but it's too bright. I think this is way too bright. ट्रकार हुआ है इस पे. I also have like this lace dress thing. इसका inner वैसे मैं use कर सकती हूँ उसके साथ. But like I don't know, I would want to wear this as a shalwar kameez, and I don't know if I can wear this as a shalwar kameez. इसके साथ मेरे पास कोई दुपट्टा नहीं होगा because this is like, this was meant to be a dress. ये मेरा कोई 10 साल पुराना, I'm not even kidding, ये 10 साल पुराना है. And it was supposed to be a dress back then, but now I want to wear like this as a shalwar kameez. तो इसके साथ दुपट्टा नहीं है मेरे पास कोई. Okay, so this is the dress. Let me find the scarf that I wanted to wear with this. Please be here. Found it. So this is my manto scarf, which I could take with this. I don't know how that looks. I don't like it. Okay, even if I wear this, I don't have any pants to go with it. Now this is a different shade of black. Okay guys, so this is amazing. I have finalized my dress and I think I finalized my shoes as well. Abhi jo balon ka hashir hua hai, I need to fix it. I'm probably gonna like put in rollers and sleep. Thoda sa damp balon mein main rollers lagaungi and then I'm gonna sleep. Few hours later, we're still practicing, but I'm gonna end the vlog here. Mere kapde and everything sorted. Rohan ki isn't. Still don't know what you're gonna wear tomorrow. But we'll see that in the morning. I will see you guys in the next video. I'm ending this vlog here. Bye bye.